Ushna Mushtaq. A warm welcome to all of you, especially President PRS, Senior Vice President, Director Communication, Course Instructor, and all the leaders and executive members of PRS in orientation class of English spoken course, batch number 2, offered Pakistan Rising Star Organization. Thanks for joining us. Let us start the session formally by Tilawat Quran Pak. And for this, I would like to ask Sana Vilayat for recitation of some verses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबा खुदा ना करे. So for नाते मकबूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, I would like to ask जोया अहमद कि वो आएं और अपनी आवाज़ से हमारे दिलों को अकीदत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर फरमाएं. दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, जाना की हुर्मत पे लौटाने के लिए है. हम उम्मती उनके हैं तो कैसे रहे महरूम, हम उम्मती उनके हैं तो कैसे रहे महरूम, गर उनका करम सारे ज़माने के लिए है, दिल फतेह सरकार बसाने के लिए है. Jazakallah. Then after that, I would like to hand over oriental ceremony to RJ Mahnoor Maqsood Qureshi, English spoken course, batch 2 instructor, to proceed the session.
Assalamu alaikum guys, how are you? This is Mahnul Matul. I have done BS in linguistics, alhamdulillah, recently from the Islamic University of Bahawalpur, and we'll be having a course that is English language course, specifically the spoken and written expressions which will be concerned. And kindly अपने extra mics जो हैं वो बंद कर दीजिए अगर किसी के खुले हैं तो it will be a great favor for me. Okay, so today we'll be having our first lecture of this course. We'll be having totally 12 lecture, and in the end we'll be having the quiz, maybe 2 or 1. I hope we'll be enjoying this course, and I welcome all of you. Welcome to the introductory class. Yes, so the first thing I want to make sure, and I want to tell you guys that जितनी भी हमारी ये strength है, right now we are having 85 participants, 85 students with us. So I hope you will understand these things, that if you really want to learn something, you have to focus something, you have to make some rules, and you have to focus those rules, and you have to follow those rules. So these rules are here. So the first is keep a notepad or notebook and pen while taking the class. This is very crucial point, because whenever you're trying to learn something, whenever you are trying to really make you learn it person, or focus in a thing, so you need to write and learn and focus. So अगर आप points बनाकर अपनी आसानी से accordingly अपने taste के मुताबिक जिस तरह से भी आप लिखना चाहें, and to memorize these things, so it will be very grateful, and इसके results आपको अच्छे मिलेंगे, and I guarantee you. And the second thing is avoid unnecessary use of microphone. This is very obvious thing. This is very definite thing. You have to avoid unnecessary use of microphones, your mics, or extra questions, because I'm having a great experience with the students जो कि sometimes बड़ा unnecessary use कर लेते हैं microphones का, and it also disturbs the class. So we'll be having some rules, and we'll be following this, and I will be appreciating you guys if you follow these rules. So students are supposed to talk in English, basically British or American accent. So the third thing is, basically I want to tell you guys that majorly here are 4 to 5 accents of English. Am I audible to you guys? अगर मुझे कोई chat में या mic off करके बता दे. Yes, ma'am, you are audible. Okay, so I should continue, right? Thank you. Okay, thank you for the confirmation. Yeah, I was talking about there are 4 to 5 major accents of English. The first is British, जो कि England में बोला जाता है, and the American one, जो कि America में बोला जाता है, Australian, Canadian, and I forgot the fifth one, but majorly American or British को focus किया जाता है, prefer किया जाता है, and we'll be preferring these two, because academics में or spoken classes में this is the focus, okay, so British accent जो होता है, I'll be giving a brief a demo of British accents, because this is our introductory class. Will not be having much information or much lecture, like much material in this class, because the introductory class hai, the purpose of this class is just to make you guys present here and to focus that ye hum padhne ja rahe hain. These are the outlines and these are the rules to follow for you. Okay. So yes, I was talking about, I'll be giving some demos in American and British accent, that how to speak in British accent. By the way, the accent of mine is, you can say American a bit. Okay, and I will make you sure that my students should also have these kind of accents and pronunciations as well. Okay, so
If a student can't, so first thing was try to talk in English, but अगर आप नहीं बोल सकते, नहीं बोल पाते, still try to speak. A student can also use Urdu in the lecture. अगर कोई question, कोई सवाल, कोई query करना चाहे, लेकिन participation is must. That responses will not be appreciated. That responses will not be depreciated. This is, sorry. कोई सवाल आया है किसी ने कुछ पूछना है किसी का माइक ऑफ हुआ था okay let's go so yeah I was talking about you have to talk in English try to talk in English but if you cannot talk if you do not talk or if you do not want to talk in English you can also use Urdu but participation is must ऐसा नहीं होने वाला हमारी क्लास में कि आप लोग पार्टिसिपेशन ना करें असाइनमेंट्स ना दें और मुझे responses ना दें I will be so much annoyed with these things if this responses and this type of behavior I get from my students. I'm very lenient teacher but participation एक class को बोरियत से बचाती है और आप सबको ये बहुत आइडिया होगा yeah so participation is must do not take the class for granted again you do not need अगर आप समझ रहे हो कि इतना कम फीस में आपको like कुछ भी नहीं मिलना यहाँ से तो ऐसा कुछ नहीं है you are going to get a lot of things you are going to get a lot of information and learning material for you guys so do not take it for granted you're supposed to come in class and attend the lecture and attend all the sessions and then taking the assignments and filling it and exercise and hands-on exercise and many more things there are so try to learn seriously and sincerely because you have paid for it right and I have also been paid so I will make sure that my students at least getting something I hope you will also get something from here a good result from here attendance will matter to judge the performance of the students आपको ये बताया गया होगा हमजा तरीन साहब ने कि attendance will matter definitely और assignment भी और कुछ percentages आपको दी गई होंगी आपने वो group में देख ली होंगी PDF file में I don't know which file is this so by the way I was talking about attendance will matter क्योंकि जाहिर है if you will not be attended, if you will not be, present here, if you will not make your presence show in the class, you'll not be able to learn anything, right? Okay. So make sure you're present in the class on time. Yes, being on time is very important because आज की example ले लीजिए कि 5:40 per class थी and students are still coming and they are late. So this I will revise these rules tomorrow again, but yeah, just wait. Sorry. Okay, so it was just a notification. Okay, fine. So I was talking about, your performance will matter on your attendance. Make sure your presence in the class, but not आप अगर मतलब आ गए class में it will not be anything like आसान. Please come on time so that you can learn better. आप सही से सीख सकें class में क्या चल रहा है, क्या participation चल रही है. So it will be very beneficial for you as well as for me क्योंकि मुझे तब तक पढ़ाने में मजा नहीं आएगा. I hope you're getting my point, right? So yeah, if you really want to learn, you have to do these things. Students are supposed to be active in the assignments and exercises as I have already told you before that you're supposed to do your assignments, assessment exercises. I'll be giving you hands-on exercises, maybe on grammar, maybe on, phonetics class, or maybe your pronunciation class. So you're supposed to attend those things and make the assignments, right? Okay, so the second last thing is logical and thought-provoking questions from the students will be appreciated. Yeah, the very very important thing is that अगर आप सवालात करते हैं मैं बहुत appreciate करूँगी. Please अपना mic off कर दीजिए. Unnecessary mic is not allowed here. Thank you so much.
एक मिनट मैं जरा चैट भी पढ़ लूं. Okay. So सब अगर आप करते हैं, participation करते हैं, I'll be appreciating you guys and I'll be very happy with your performance. लेकिन yes, वो सवाल thought provoking, food for mind and logical हों तो क्या ही बात है. Yes, among the students, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि some sort of like any you can say conflicts or any bad element. I'll not be able to मैं मुझे अच्छा नहीं लगता. तो cooperation among the students बहुत अच्छी चीज़ है और होनी भी चाहिए and I'll demand this thing in my students. तो हमारा ये साथ 1 महीने का है. इंशाल्लाह will be continue our studies, will be continue this course. पूरे महीने में हमने काफ़ी कुछ पढ़ना है. तो आप लोगों से गुजारिश है कि cooperation आप आपस में among the students it should be seen. You know what I'm talking about. Okay, so अगर for example ये cooperation किस बारे में है, not just कि आप just क्लास में आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं whatever. मैं ये चाहती हूँ कि अगर असाइनमेंट में किसी को प्रॉब्लम है तो they can cooperate with each other. Exercises किसी से solve नहीं हो रही तो they can cooperate with each other. So yeah, this was it. So let's discuss the outline of the course. Next slide, please. Okay, जरा पीछे कर दें दोबारा से एक slide. Thank you so much. Okay, up till now, anybody wants to ask any question about the rules or anything else? Yes, we will try to cooperate with each other. Thank you so much. And अच्छे responses आ रहे हैं आपकी तरफ से. आवाज़ नहीं आ रही, किसको आवाज़ नहीं आ रही यार? Of course, ma'am, inshallah. Okay, thank you so much for the response. Anything you want to ask, you can ask. I'm giving you some seconds to ask. Excuse me, ma'am. Yeah, sure. हाँ जी. Excuse me. Yes. मैम जो आप हमें पढ़ा रही हैं इसकी हमें वीडियो भी मिलेगी ताकि हम उसकी तरफ से नोटबुक तैयार कर These लें. recordings will be given to you guys. No question, ma'am, as you have cleared everything. Yeah, thank you so much, Mohammed Numan. Yep, everything is clear till now. Nazia Khan, thank you so much. Okay, fine. So next slide, please. Okay. Introductory class. We'll be having 12 classes. I've already told you before. So today is our introductory class. मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों को पता है इस बारे में कि इंट्रोडक्टरी क्लास चल रही है हमारी. प्रॉपर स्टडीज इसके बाद शुरू होंगी. इंट्रोडक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स ये कंक्लूड करता है हमारे आज में मतलब सॉरी मेरा मतलब था कहने का कि आज के दिन हम इंट्रोडक्शन करेंगे टीचर का और स्टूडेंट का. लेकिन आफ्टर द लेक्चर इन द एंड students educational background. I am very much interested in knowing these backgrounds कि किस डिग्री से किस फील्ड से आप लोग यहाँ पर आए हैं. I love to know these things because this is very much important to know the mindset of the students because I'm teaching you guys and I have to teach you in a same board. तो किस किस फील्ड का किस टाइप का लाइक स्टूडेंट होता है उसको किस तरीके से पढ़ाया जाता है. सो आई विल लव टू नो दीज थिंग्स क्योंकि आई एम द टीचर एंड आई हैव टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स कि आप किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं. Okay, general discussion about the interests. So I'll be knowing your hobbies, interests, and how you got there. Okay, so मुझे एक और notification आ गया. Okay, fine. Difficulties they have been feeling for so long in learning English language. Yes. So I'll be asking some questions to you guys कि अभी तक आपने अपनी studies में अपने educational background, educational full era में जितनी लैंग्वेज के लिहाज से इंग्लिश के लिहाज से जितनी भी डिफिकल्टीज आपने फील की हैं आपने फेस किए हैं. आई विल बी आस्किंग दीज थिंग्स
कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि हम इंग्लिश में कुछ कहीं ना कहीं वीक हैं, या अगर नॉर्मल हैं भी तो जस्ट नॉर्मल क्यों हैं, why we are not excellent in this. So I'll be asking these types of questions from you guys. And why do you think we should learn English? So in your prospect, ये जो 100 यानी कि 100 स्टूडेंट मेरे पास बैठे हैं इस लेक्चर में, तो why you are here? I'll be asking this purpose, but in the end. तो अपना अपना ये जो आज का जो मैं क्वेश्चंस अभी बता रही हूँ स्लाइड में, तो काइंडली इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के रखिए. आई विल बी आस्किंग टू यू गाइस, और जिसका इंटरेस्टिंग होगा विल एंजॉय द लेक्चर डेफिनेटली. ओके, why can't we speak like a native speaker of English? Again, मैंने ये क्वेश्चन वैसे मैंने अपने पिछले कोर्स में भी I have asked this question and tried to resolve this question, that why cannot we speak like a native speaker. So again I'm asking this question. Think about this, and why do you think you should learn English? Think about this. And why do you think, like, which difficulties are you facing and feeling till now in your educational, whole educational background and whole educational area, मतलब educational time. तो इन सवालात के बारे में सोचिए, and I'll be giving you time to answer these questions, right? What, in your point of view, are the reasons behind this weakness? Yes, if we cannot speak like a native speaker, or we are not able to even speak good English, so this is our weakness, right? I hope you are getting my point. This is our weakness. ये हम इसको strength में count नहीं कर सकते, और हम जहाँ भी जाते हैं interviews में या कहीं भी job के लिए, तो ये English हमारी sometimes weakness बन जाती है. So why is the reason? What are the reasons behind this? And why do you think this happens? So you should also think about this, and I'll be asking this question in the end of the lecture, right? I hope you're getting my point. What measures should we take? Yes, सब कुछ पूछने के बाद I will ask to anybody कि आखिर करना हमें क्या चाहिए, जो हम definitely I'll be giving you these answers. Definitely I'll be solving these questions throughout the month, throughout the time, throughout the course, लेकिन start में introductory lecture में आप क्या सोचते हैं कि why you are here, what is the purpose of this course, and why you are maybe if you say wasting your time here. Okay, so next slide please. Okay, am I audible? I am again asking this question. Yes, ma'am. Thank you so much. Okay, so our first lecture was introductory lecture, and the second was introduction. तो हमने इस कोर्स का करा लिया, लेकिन हमने खुद का introduction कैसे कराना है? जब I'll ask this question कि introductory lecture में आप अपना introduction करवाएं, किस background से हैं, किस field से हैं, what are you, who are you, how you're working in your field, and what do you. Thank you for choosing Zoom. What is this? Okay. So self-introduction कैसे करवाया जाए? What are the exact way to introduce yourself? Maybe in the public, maybe in private, maybe in friends, maybe in parties, maybe in convocations, or maybe in interviews. Like हमें self-introduction जिंदगी में बहुत दफा इस चीज से पाला पड़ता है, and we don't know how to do it exactly, right? So I'll be solving this problem, and I hope you will cooperate with me also, and I hope you will try to participate and to be active in this course. Okay, so we will learn in this lecture, जो कि हमारा कल lecture होना है self-introduction का. Is that important to learn or memorize fluently a concise self-introduction of yourself? आपको क्या लगता है? आपका क्या ख्याल है कि क्या हमें एक 2-4 लाइनें रट लेनी चाहिए, क्रैम कर लेनी चाहिए कि यार अगर कोई हमसे पूछे, so we will fluently tell these things to that person. तो आपका अगर ये ख्याल है, तो ये इस ख्याल को हम जरा जज करेंगे. कल के दिन इसके ऊपर रोशनी डालेंगे. We will go through this question and we will see अगर हम कुछ रट लेते हैं या फ्लुएंटली कुछ मेमोराइज कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं अपने इंट्रोडक्शन की 2-4 बातें, is it okay or not, or what is it?
formal and formal introduction. जनाब आपको मैंने बताया कि there are so many types of introduction, like no, there are so many backgrounds, there are so many situations in which you have to tackle this problem, in which you have to introduce yourself, in which you have to say yes, hello, I am this and I am this and I'm doing this and I'm from this age and I'm from this field or subject or etc. from this company. So in सब बातों में, इन सब self introduction में कुछ part formal होता है, कुछ informal होता है. कहीं आपको जो introduction, कोई situation आपके सामने आ जाती है, so maybe this is formal or maybe informal introduction. So these both introduction, formal and informal introduction, are basically two different types, and you have to learn कि ये इन दोनों में क्या different है, और you have to learn, and I'll make you learned person कि कम से कम अपना self introduction हम अच्छे से करवा सकें. Okay, what includes informal and informal introduction? जब हमने जान लिया कि formal and informal introduction है क्या चीज, what it is actually in obvious or in पता चल गया कि हमें है क्या चीज, so उसका उसमें include क्या क्या होता है. We will go through these things, और do's and don'ts क्या क्या हैं, कि हमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए. Formal and informal में what are the rules and what things are making our introduction, our self introduction fascinating and good and interesting. Are you getting my point? I hope you're getting my point. और अगर नहीं भी तो I hope आपने पेन पेंसिल किताब किताब नहीं, कोई नोटबुक उठाई भी होगी, और कोई क्वेश्चन होगा, please note there, and we'll be talking, we'll be gossiping, and we'll be chatting in the end of the lecture. Okay, how to be prepared when suddenly you got in the situation to interact and describe yourself and your personality in the public. Again, a problem, अगर कोई अचानक से आ जाता है पब्लिक में, जनाब बताइए क्या हाल चाल है आपके, और अपना इंट्रोडक्शन बताइए, आप क्या करते रहे हैं, क्या एज है आपकी, और समझ लीजिए, कंसिडर कर लीजिए या सपोज कर लीजिए कि वो एक आपका फैमिली फंक्शन है, आप किसी फैमिली फंक्शन में के फैमिली इवेंट में हैं, और एक बड़े अंकल से मतलब आपका मुलाकात होती है, और वो एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, और आपका बड़ा अच्छा चांस है कि आप वहाँ पर जॉब ले सकें, या वो आपको हायर कर लें, या उनसे आप अच्छे ताल्लुकात बना सकें. लेकिन अचानक से आपको पड़ जाती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, एंड यू आर नॉट एबल टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इवन, तो वहां पर आपका इमेज it falls down. So at least you in this age, मेरे ख्याल से यहाँ पर सब यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स तो होंगे, मुझे आइडिया नहीं है किस एज के हैं, लेकिन ये चीज़ एटलीस्ट आनी चाहिए कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इंटरेस्टिंगली, क्या कुछ इंटरेस्टिंग अपने इंट्रोडक्शन में डाला जाए कि अगला बंदा फैसिनेट हो जाए. तो आई विल बी आस्किंग कि आपकी क्या एज है और क्या आपके इंटरेस्ट या किस बैकग्राउंड से हैं, ये तो मुझे बाद में पता चलेगा इन द एंड ऑफ द लेक्चर. मैंने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन आपसे इसलिए नहीं किया कि this is so boring thing for me, और इंट्रोडक्शन तो होते रहते हैं, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन जब हमारा we will make a relationship of teacher student and we'll be continuing our course, जो हम learning कर रहे होंगे, मैं कुछ आपसे सीख रही होंगी, and you'll be seeking some things from me. So it will be much more than just introduction, कि आप से मैं टाइम ज़ाया करवाती रहूँ कि जनाब एक एक करके बताएं अपना नाम वगैरह. तो स्टार्ट में ये नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से एंड में होना चाहिए आपसे इंट्रैक्शन के बाद. तो दैट्स व्हाई आई जस्ट डिड दिस. अच्छा, तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई? How to be prepared. Okay, it was done. Yeah, how to cope up the fears of interaction. Again, you have some fears inside you. You have some nervousness and interaction नहीं कर पाते. So we'll be trying to coping up these things. और आपको मैं time दिया करूँगी, आपने कुछ अपने voice messages मुझे भेजने हैं कि how to introduce yourself, but it will be a part of tomorrow's lecture. आज के lecture में ये included नहीं है. So it will be assignment of tomorrow's lecture. Which points you should memorize about your basic introduction, basic self-introduction. Okay, so the next slide, please.
Okay, किसी ने लिखा है मैम today very interesting and best lecture. अच्छा, thank you so much. Yes, I'm getting speaking English is my passion. Yes, ma'am, I have a problem. I really like the way you're teaching. Thank you so much. Thumbs up. Okay, कहाँ गया वो message? गया है. Yes, ma'am, I have a problem. Okay, English is very tough subject. कोई मसला नहीं है, शानजा, Shafiq. It's not very tough. Yes, it is sometimes tough, but when we practice, it will not, be much tough. Speaking English fluently, frequently, sorry, is my passion on peak point, ma'am, subject. I think this course will be interesting as ma'am is very nice and way of teaching. Thank you so much, Muhammad Numan. Exactly, ma'am. So speaking English fluently, okay. It's my time. Thank you so much. Okay. So yes, मैं फिर अपना जो है सेशन थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ. मगरिब की अजानों का वक्त होने वाला है. आई थिंक हो चुका है और किसी ने मुझे मैसेज में कहा हुआ भी है. Okay, fine. So in the third lecture, जैसा कि आपको सबको पता है कि we'll be having weekly lectures Saturday, Sunday. So this weekend we'll be having first two our introductory class, and tomorrow will be our self-introduction. So I hope you'll be present there, and I hope you will be participating there. And then third lecture हमारा basic grammar का होगा. It will be including parts of speech, जो कि मुझे तो personally थोड़ा boring ही लगते हैं. I don't know how you get this. And types of sentence and tenses. Though this is very basic grammar, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप confident हैं तो ये थोड़ी सी basic grammar भी आपको अगर weak है ना तो आप चल सकते हैं English में, कोई मसला नहीं है. So this fourth lecture will be hands-on exercise. Next slide, please. Next slide. Thank you so much. Hands-on exercises. जाहिर है we'll be having grammar exercises there क्योंकि grammar को exercise और practicing और tenses को practicing और parts of speech को practicing के अलावा हम सीख ही नहीं सकते. We'll not be able to learn anything अगर हम practice नहीं कर रहे तो. So here I will be suggesting you a book कि Renan Martin की book है WREN and Martin, MARTIN. Renan Martin की book है. अगर you're really interested in learning grammar, so you can purchase that book. Red color के cover में होती है, and this is very good for learning basic grammar. और वहाँ पर exercises भी होती हैं. विन मार्टिन बुक हम यूज करते हैं. Okay, I'll be talking you in the end. अब मैं इसको जरा slides को cover up कर लूँ. And thank you so much if you give me some time. Okay, fifth slide, please. Fifth lecture, class 5, communication skills. आखिर है क्या चीज़ communication skills? जाहिर है हम tackle करते हैं communication skills की problem को, communication errors को, जिसको हम कहते हैं errors basically. हम अपनी daily life में sometimes मैं खुद भी बड़ा फील करती हूँ कि मैं अटक के बोलती हूँ या मुझे sometimes लगता है कि मुझे एंजाइटी से कुछ समझ नहीं आ रहा. तो डेफिनेटली हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं 4 चीजें इंक्लूड करती हैं अपने अंदर. This is speaking, listening, writing, and reading. These are the communication. These are the sources. These are the means of communication, right? Importance of communication skills will be हम रोशनी डालेंगे, कुछ उर्दू में भी बात कर लेते हैं, कुछ रोशनी डालेंगे हम communication skills की importance पे, कुछ आपसे बात करेंगे. एंड आपसे बात करने का जस्ट यही मकसद होगा कि आप लोगों को कुछ पार्टिसिपेशन के लिए मौका फराहम किया जाए और आपको क्या कहते हैं, अब ज्यादा इंग्लिश नहीं आ रही मुझे. खैर, types of communication, I will be telling you the types of communication. Again, I have told you before कि 4 types of communication होती है: reading, writing, listening, and speaking. So these are the modes of communication. And अगर ये आपको sometimes अच्छा, मुझसे रिसेंटली एक क्वेश्चन, अगर मैं आपको अपनी पर्सनल बात शेयर करती चलूँ, मैं अभी एक इंटरव्यू दे रही थी तो उन्होंने कहा कि अच्छा यू आर अ गुड स्पीकर, क्या आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हैं? तो मैंने कहा, ये मैंने अपना कोड बैठे बैठे बनाया, कोटेशन, कोटेशन पता होगा आपको, कि a good speaker cannot be a perfect writer and a perfect writer cannot be a good speaker.
मुझे लगता है, I don't know ये सही सोचा मैंने या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल यही है. So I will not say कि I am very much perfect in my writing skills, but I can say that I can be a speaker. तो मुझे ऐसा ही लगता है. अगर आपको ये लगता है तो आप मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा. एंड अभी तक काफ़ी सारी बातें हो गई हैं जो मैंने आपको लिस्ट अप कर दी हैं कि एट द एंड हमने क्या क्या बातें करनी है. So the 6th lecture will be class 6. Yeah, thank you. Interviewing. Yes, the most important thing in the jobs. जाहिर है बेरोजगारी की कमी है जनाब, और हमें इंटरव्यूज हर कुछ टाइम बाद यानी देने पड़ते हैं. मैं तो आजकल बहुत इंटरव्यूज दे रही हूँ. उम्मीद है आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा. मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि इंटरव्यूज इज द बेसिक प्रॉब्लम कि इतने इंटरव्यूज देते हैं हम कि अक भी जाते हैं जॉब के लिए. और लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, चलो मैं या इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स तो अच्छा इंटरव्यू देने के शायद काबिल हो जाएं अंग्रेजी में, अंग्रेजी झाड़ के इम्प्रेस कर दे बंदा. लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए they will not be able to speak good English, maybe they feel hesitation. तो मेरे ख्याल से we are in need of learning the skills that learning the points कि क्या असल में क्या होना चाहिए इंटरव्यू के दौरान, हमें अपना बिहेवियर कैसा रखना चाहिए, how we should dress up, how we should make our eye contact with the interviewer, how should we prepared with the stuff कि हमारा field क्या है, हमारा हमें क्या कुछ knowledge होनी चाहिए. तो इंटरव्यूइंग काफ़ी ट्रिकी चीज़ है. और अभी तो अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो बहुत लकी जा रहे हैं आप लोग कि इंटरव्यू नहीं देना पड़ते आपको. जो लोग जॉब हंटिंग कर रहे हैं तो उनके लिए ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ है. खैर, डेमो विल बी गिवन ऑन द लेक्चर डे. 6th क्लास जो हमारी होगी, आई विल बी गिविंग यू द डेमो इन द लेक्चर के इंटरव्यू आखिर होना कैसा चाहिए. अपीयरेंस मैटर्स a lot, not less. Preparation, definitely आपका जो सब्जेक्ट है, you have to be prepared. Element of the confidence, confidence नहीं है तो बस ठीक है. फ्लुएंसी आपकी होनी चाहिए. एक होती है फ्लुएंसी, एक होती है प्रोफिशिएंसी, और एक होती है पता नहीं क्या. खैर ये दो जो चीज़ें होती हैं, और ये फ्लुएंसी और प्रोफिशिएंसी अगर आप में नहीं है तो अपीयरेंस आपकी अच्छी नहीं लग रही होती और आप बोलते हुए भी अच्छी नहीं लग रही होती. फ्लुएंसी आपकी होना और कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू, इफ़ यू आर गिविंग एन इंटरव्यू. क्रिएटिव थिंकिंग, यस, समटाइम्स आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग रिफ्लेक्सेस आपके होने चाहिए कि अगर कोई बंदा नहीं, इंटरव्यूअर आपसे अचानक से ऐसा कोई सवाल कर दे तो लाइक जो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, जो आपने कभी सुना भी नहीं है, जो जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं है, और वो उसके लिए ऐसी थिंकिंग की ज़रूरत है जो कि क्रिएटिव बंदा हो या क्रिएटिव थिंकिंग हो या उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स करता हो या उसमें इतनी पावर हो कि वो अचानक से प्रॉब्लम सॉल्व कर दे. तो इट विल आल्सो मैटर इन द इंटरव्यू. तो ये भी एक बड़ा इंट्रीगिंग चीज़ है. वी हैव टू लर्न दिस थिंग. ओके, नेक्स्ट लाइन प्लीज. कितना टाइम हो गया हमारी क्लास को? एनीबडी विल टेल प्लीज. मैम हमारा 40 minutes मैम. ओके, 40 मिनट्स इतनी जल्दी गुजर गए, पता नहीं चला. खैर, आर यू एंजॉयिंग द लेक्चर? आर यू फीलिंग फ्रेश और नॉट? क्या मैं बोरिंग तो नहीं लेक्चर दे रही? इफ यू आर गेटिंग और समथिंग और लाइक प्लीज शेयर योर व्यूज. Yes, ma'am. We are getting all the points. Okay, thank you so much. So the 7th class will be our speaking and listening skills. ठीक है? तो जनाब, as I've told you before that there are 4 means of communication: speaking, listening, writing and reading. So speaking and listening एक ऐसी चीज है जो आपको देखिए ना, writing and reading तो आपको just papers में या exams में काम आएगी. Speaking and listening तो ऐसी चीज है जो आपको हर जगह काम आएगी. और ये speaking and listening skill जो है मेरे ख्याल से is more important than the reading and writing skills. So I'll be giving you some important points, and I'll be giving you some information about the importance of speaking skills in our communication, importance of listening skills in our communication,
spoken dependent on the knowledge of phonetics and phonology. Basically, phonetics and phonology जो linguistics के students नहीं हैं, उनके लिए मैं बताती चलूँ कि phonetics and phonology is the subject जो कि language का subject है. और अगर phonetics and phonology जिस बंदे ने समझ लिया, उसको interestingly पढ़ लिया, उसके लिए speaking and listening is not a big deal. You know, I'm saying you with my honest opinion and with my experience, if you know the knowledge of phonetics and phonology, if you know how to make it, how to create sounds and how to, you know, articulate the sound and how to pronounce the sounds, then you'll be able to speak well in the public, in the, you know, party or in the friends. Speaking is mattering a lot on the knowledge of phonetics and phonology. This is the subject, and I'll be giving you a brief introduction of phonetics and phonology on the 7th lecture of speaking and listening skills. Aspects of EILTS test. Yes, जो abroad जाने के लिए they are aiming for going abroad. So this test is so much important, and this test is also including these 4 means of communication. So speaking and listening यहाँ पर बहुत matter करती है EILTS test में. So can you find the reasons behind the inability of speaking skills? ये भी एक question है और इसके बारे में आप सोचें. 8th class 8, pronunciation practice. Definitely, if we are having our you know, speaking skills good, so we can pronounce our words, sentences, talk, conversation, chats, gossips. And pronunciation अगर आपकी गलत है तो आप public में बैठे-बैठे अपना मजाक भी बनवा सकते हैं. So, you know, exercises इसकी मैं दूंगी on the lecture day. 9th will be reading and writing skills. Importance of these skills in our communication, I will be telling you. Definitely, अगर आप CSS की preparation कर रहे हैं, or if you are aiming, or if you are thinking to attempt CSS, you'll not be able to pass until आपका essay writing pass नहीं होता. Because I have prepared for this test, I have prepared for this exam, and this is not a child play. You know, it is not a child's play. So I will suggest कि अगर आप really interested हैं इस तरह के एग्जाम्स देने में और पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने में, या सही मतलब एक कहना चाहिए कि हायर पोस्ट पे जाने के लिए, तो you have to do work on your writing and reading skills. Definitely writing आपकी तभी अच्छी होगी if you are a good reader. Reading आपकी तभी अच्छी होगी जब आप कुछ अच्छा पढ़ते होंगे, like अखबार या डेली न्यूज़ या किताबें. तो एक्सपोजर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी. 10th lecture, please. Okay, so written exercises will be given. Yes, आपको पैराग्राफ दिया जाएगा. Paragraph will be provided. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, there is an emergency. May I go? Yes, we are just winding up our lecture. So if you want to go, you can go. Ma'am, there is an emergency. I have to go. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Class 10 will be having our written exercises, and I will be providing you. Class 11, I'll be giving you essay guidelines, discussion on the rules of, please 11th slide nikal dijiye. Discussion on rules regarding essay in CSS exams. Again, जितना ज़्यादा important writing and reading CSS exams में मेरा नहीं ख्याल किसी और जगह होगा. Definitely आप academics में अपने अगर आप अच्छी GPA लेना चाहते हैं तो you know, university में essay writing में या कहीं भी, तो you will have to tackle the writing skills. लेकिन सबसे ज़्यादा you have to tackle writing skills in essay. Essay is a subject in CSS, if you know, आपको idea होगा ही. Okay, so essay के जो rules and regarding CSS exams, I'll be telling you those rules. Class 12 में I'll be giving you some topics, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि it is, you know, impossible कि आपको essay की practice करवाई जाए या ज़्यादा से ज़्यादा
पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करवाई जाए. It will not be, you know, okay in a month, एक month में इतना कुछ नहीं cover कर सकते. लेकिन what can I do? I'll be providing some topics, जो कि some topics नहीं, almost जितने भी topics होते हैं CSS में जिस types के होते हैं, जितने types होती हैं, I'll be informing you about all these types. Yeah. And yeah, that's all. This will be our end of the session, and end में आपको quiz दिया जाएगा जो कि PRS ही बनाएगा. So this is the end of our lecture today. If anybody wants to ask or if anybody wants to leave, you can leave. और अगर आपको बाद में टाइम मिले लीव करने के बाद तो ग्रुप में आप आंसर कर सकते हैं जो मैंने आपसे क्वेश्चन किए हैं. और उसके अलावा if you want to ask or discuss something, you can discuss here. That's all from my side. Thank you so much, ma'am. It's a thank